random. Please try this, send the answer on the Zoom chat. You got the answer. जी हाँ, that's correct. Medium. Try this. Okay. The element 114 has been discovered recently. It belongs to which of the following family group and the electronic configuration? थोड़ा बताएं कैसे किया आपने? Yes, Alia. सर मैंने गेस किया है ये वाला। Yes, कर रहे हैं सिर्फ आप. चलिए ठीक है, देखते हैं. First of all, do you know what is the atomic number for radon? Yes, Alia. Atomic number for radon? No, 86. 114 right? 114 कहाँ से होता है? 114 तो Z का है. रेडॉन का 86 होता है. ठीक है. 114 will be just it will not be 86 होता है रेडॉन का. Then you add these number of electrons. 86 plus 4, this will be equal to how much? 90. 90 plus 10, 100 plus 14. So this is 114. So this can be, what about others? 14, 10. This cannot be, because if you are going to add these numbers with radon, it will not give you 114. Similarly, if you add these numbers, and then for radon 86, then again here's 6 pieces. So this is also not going to give you 114. For halogen family also, if you're going to add, then also it is not going to give you 114. So only by looking at the electronic configuration, you can get the whether this particular number of electron is equal to 114 or not. Because the number of the atomic number, it is equal to number of electrons also. Okay, so the A answer will be correct because of this reason. Okay, and it will be in carbon family with this particular configuration.
How are we checking the configuration? We don't know the configuration. For sure, we don't know the configuration, but at least it should have the same number of electrons as it is having the same number of protons. And 114 electrons होने चाहिए. So just equating the number of electrons, the answer is 8. ठीक है, चलिए moving on. Okay, Nabil is here. Assalamu alaikum, Nabil. Alaikum salam, sir. What happened? You were absent a few days. Absent a couple of days, I guess. Sir, I had computer test, so I was preparing for that. अच्छा, yeah. How was it? It was easy, sir. So today we are doing periodic properties. Now, Okay. did you get this question? No, sir. Did you get this question? Did you understand this question? No, no. Just read it once, though, and then I will explain. No, sir. So they're asking like the element Z means atomic number. I hope you know that, right? Yeah, yeah. So this is 114. Now it has been recently discovered, and they are saying which of the family or group and the electronic configuration. They are asking the family or the group and the electronic configuration. So number of protons, whatever we are having, that is Z, should be equal to the number of electrons. Make sense? Yes, sir. So I'm Phil. First of all, check whether all of these electronic configuration they are having 114 electrons or not. So if it is not having 114 electrons in the electronic configuration, then obviously that electronic configuration is not correct. That makes sense. Yes, sir. ठीक, अब ध्यान दीजिए जरा. यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? This is radon. Radon's atomic number is 86. That means 86 electrons are already counted for radon. Then we have 14 plus 10 plus 2 plus 2. 2 plus 2 will be 4. So 18 plus 4 plus 10 plus 14. So this is going to give you what? 104. So this can be a configuration. I'm not saying this will be, this can be a configuration. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now let's look whether this configuration will be possible or not. If I look here, all the configuration for 5F, 6D, and 7P2, we are here we have 7P2, which was 114. अब ये तो 116 हो जाएगा, right? Does that make sense? Now here we also have all the things same, and then here we have 7P6. So 7P6 क्या हो जाएगा? 118. फिर यहाँ 7P5 है, so this will be 170. So all of these are what electronic configurations for different elements. है ना? सिर्फ it is only correct for the E1. Make sense now? Yeah. Understood.
Again, we have noted this down. Try this. Theorem. You have to say which does not agree, by the way. है ना? कौन सा correct नहीं है ये? चलिए देखिए इधर. See, iodine, bromine, chlorine, chlorine. Increasing electron gain enthalpy. अरे भाई, electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. It will depend on what? It will depend. Electron gain enthalpy सबसे ज़्यादा किसका होगा? So the following does not agree with the variation property indicated. So यहाँ पे ये थोड़ा सा पंगा है. That chlorine will have higher electron gain enthalpy than fluorine. ठीक है. This is incorrect. What about the other? Lithium, sodium, increasing metallic radius, Linagram. ये तो सही है. मान लिया. This is increasing ionic size. तो ionic size के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा. Anions they have greater ionic size than neutral और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा होता है? Cation. तो Al3 positive सबसे छोटा, Mg2 positive, हाँ ठीक. This is also correct. Increasing first ionization enthalpy नहीं. यहाँ पे एक सेकंड. Boron, carbon, nitrogen, oxygen. This is not the order. एक्चुअल ऑर्डर जो होता है उसमें रिवर्स हो जाता है. नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ P3, है ना. नाइट्रोजन इट इज हैविंग
P3 configuration, that is half filled, that's why it is more stable. So this is the actual. So this is also wrong by the way. दो भी wrong. तो फिर ये marks मिल गए बच्चों को 16 में. चलिए moving on. Try this. So this is a very similar question what we saw last time. अभी क्या हम लोगों ने अभी फर्स्ट अच्छा फर्स्ट आयनाइजेशन था अभी ना हमको लगा रिगार्डिंग द हाँ फर्स्ट आयनाइजेशन था अभी हमने हाँ ओके रम फिर देखिए अभी हम लोगों ने बताया था दैट कार्बन देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है फ्लोरीन सो डी थोड़ा सा हम आप लोग को बता देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं देखिए जरा बार बार कंफ्यूजन होता रहेगा ध्यान से थोड़ा सुन लीजिएगा रिवाइज भी हो जाएगा ठीक है ध्यान दीजिए जरा सो सबसे पहले आपके पास आता है जेड इफेक्टिव when we talk about properties there are few properties that we have to learn about ठीक है जेड इफेक्टिव उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है रेडियस और साइंस साइंस विल बी अ बेटर वर्ड सबको इनकॉम्पनसेट कर लेता है साइंस then we talk about delta H ionization that is ionization enthalpy then we talk about delta H EG electron gain enthalpy and then we talk about the electronegativity showing represented by chi now Z effective जो है Z effective and science these are very important properties because इन्हीं के ऊपर ionization enthalpy electron gain enthalpy और electronegativity depend करती है majority like the trend it depends on Z effective and science जो trend होता है for example trend का मतलब क्या है so this trend if I see ना तो this ये आखिरी वाला और ये सबसे ज्यादा ठीक है so you can see a upward trend so we can say that what is happening let us suppose stock price मान लीजिए ये time है and this is the price of something so we will see that it is showing a upward trend it is increasing the price is increasing with time so does that mean it is never decreasing no it is decreasing also sometimes see there's a huge decrease there's a huge dip here है ना but what I will say the trend is what trend है increase करने का थोड़ा ऊपर नीचे होता है but trend क्या increase है so the trend it is going to depend on what's Z effective and size for ionization enthalpy electron gain enthalpy and also for electronegativity but the exceptions जो होंगे ना the exceptions will be based on electronic configuration most of the time जहां पे भी आपके पास एक्सेप्शन का केस आएगा वहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जेड इफेक्टिव व्हाट इज जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तो न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड हाउ मच चार्ज इज द लास्ट और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसिंग दैट इज नोन एज द जेड इफेक्टिव अब डिपेंड किस पे करेगा जेड इफेक्टिव ध्यान देखिएगा
Z effective is going to depend on, let's suppose here we are having, आपके पास right से left जा रहे हैं. In a period you are going right to left. So what is happening? The number of protons in the nucleus is increasing. Shell is not increasing. तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है और distance between the nucleus that is same approximately, but the nuclear charge is increasing. तो ये और अच्छे से attract करेगा. That means left to right in a period, left to right in a period, Z effective increases. Top to bottom में क्या होगा? Top to bottom में there is an increase in the nuclear charge, a large increase in nuclear charge, but also the shell number increases. That is why top to bottom in group Z effective is same. Z effective में कोई change नहीं आता है. ठीक है. अब उसी तरह देखते हैं साइज में. तो साइज में भी क्या देखेंगे? सबसे पहले लेफ्ट टू राइट. ठीक है. लेफ्ट टू राइट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लेफ्ट टू राइट में आपके पास as we go left to right, then what is happening? Z effective is increasing. Z effective is going to increase. That means the proton is attracting the nucleus. Proton is attracting the electron, the farthest electron, the valence electron, very effectively. So size छोटा होता जाएगा. Size decreases. Top to bottom अगर हम जाएंगे in a group, then in that case what is going to happen? The shell will increase. So why is size decreasing? Because Z effective increases. Top to bottom in a group, what is going to happen? The Z effective is constant, but the size is going to increase because of shell number. The size increases due to new shell. ठीक है. अब देखो डेल्टा H आयनाइजेशन. इसमें अगर लेफ्ट टू राइट जाए, then what is going to happen? Ionization enthalpy represents the energy that is required to remove the electron, to remove the valence shell electron, remove the farthest electron from an atom. Now, why we cannot remove the electron? Because the electron is attracted by nucleus. जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा हार्ड होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालना. दैट इज व्हाई यू विल से दैट लेफ्ट राइट जाने पे डेल्टा H आयनाइजेशन इट विल इंक्रीज. क्यों? बिकॉज साइज जो क्या हो रहा है, साइज इज डिक्रीजिंग. ठीक है, साइज इज डिक्रीजिंग एंड Z effective is also increasing. If the nuclear charge increase करा, when the nuclear charge is going to increase, then it will be attracting the electron more efficiently. Then also it is going to be hard. When the size is also decreasing, then what's going to happen? The electron is much more nearer to the nucleus, so it will be experiencing larger attraction. That's why it will be difficult to the electron from. If I go from left to right, वही अगर हम top to bottom की बात करें, then in that case what is happening? The electron it is in further and further shells, दूर चला जाता जा रहा है. That is why what will happen? Delta H will decrease as size increases. ठीक है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में अगर हम आए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में लेफ्ट टू राइट अगर आप जाइएगा, now electron gain enthalpy it is generally what? Negative. That means it is exothermic. So whenever we say the electron gain enthalpy is high, we are saying that it is high in the negative release zone. When we are saying ना delta H is high, तो वो नंबर हाई होगा, आप उसको वैल्यूज की नेगेटिव मान के चलिए. ठीक है, पहली चीज ये आप ध्यान रखिए. Whenever we say delta H Eg is high, electron gain enthalpy is high, just understand that the value is very high, but the sign will be negative. Fine. अच्छा, अब लेफ्ट राइट अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे डेल्टा H Eg के साथ क्या होगा? When we are inputting a new electron in the shell, then what's going to happen? That electron will experience some attraction from the nucleus, and when they are experiencing some attraction from the nucleus, then there will be attraction. Attraction की वजह से एनर्जी रिलीज होगी. As the attraction increases, more energy will be released. So if we are adding the electron closer to the nucleus, if we are adding electron closer to the nucleus, then the incoming electron will feel or experience larger extent of attraction. That is why what's going to happen in this case, left to right delta H Eg, the value of delta H Eg will also increase. Value increase करेगा. Negative याद रखिएगा आप ध्यान. ठीक है, back of the mind negative रहेगा value. like ठीक एक चीज ये. When I go from top to bottom, if I go from top to bottom, then what's going to happen? The Heg is going to decrease. Why? Because we are putting the incoming electron in further shells. The shells are very far away from the nucleus. We go from top to bottom. एक चीज यहाँ पे, noble gases have positive delta Heg. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लेफ्ट टू राइट क्या होगा? The electronegativity increases. इसको क्या चीज नोट किया जाता है? And top to bottom इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लीजिए
बाकी इसमें और भी चीजें आएंगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? ऑल ऑफ दीस आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इजियर, सेकंड टफ होगा, थर्ड और टफ होगा। अगर कंपेयर करने के लिए दे दिया आपको, एक दिखा रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी इजी, बट इन कंपैरिजन टू द अदर एलिमेंट द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, energy it is not as high as the first one। इसमें हम क्या समझेंगे, पहला एलिमेंट है वो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा, यानी कि ग्रुप 1 में का है। फॉर द सेकंड एलिमेंट व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज फाइन, ओकेश, बट सेकंड इज नॉट एज हाई एज इट शुड बी, दैट मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन वो काफी आसानी से दे रहा है, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी इन द ग्रुप 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखा जाता है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। सुनो जी बताएं। सर, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन शेल में डालते हैं तो इससे साइज डिक्रीज होता है। नहीं, साइज डिक्रीज नहीं होता है। क्यों? साइज इंक्रीज कर जाएगा बेसिक, मतलब ऐसे तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आई पॉजिटिव से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके बाद आई है, उसके बाद आई नेगेटिव है, राइट? तो जो एनायन होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन का। ठीक है, तो जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट और राइट जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं ना, एंड नहीं नहीं इफेक्टिव नहीं न्यूक्लियर। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हैं, प्रोटॉन भी ऐड करते हैं, प्रोटॉन नहीं ऐड करते। हाँ, मैं वही कहती फर्क समझ में आ गया अब? व्हेन वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब आई पे नेगेटिव आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं। हूँ। सर, आपकी वॉइस यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? मेरी वॉइस, मेरी वॉइस क्या सेकंड हो रही है तो बताएंगे? रिपीट, लैग हो रहा है। आई थिंक लैग इट्स हो फ्रॉम रहा माय साइड। है, saying when we are talking about delta HEG, electron gain enthalpy, then we are only adding electron, not the proton. But when we go from left to right, we are adding electron as well as proton. That is why the size decreases. मतलब आप इस तरह समझिए ना कि 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में अट्रैक्शन तो उसका होगा। अगर हम कंपेयर करें 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब 4 पॉजिटिव, इवन इफ द कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन आल्सो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की वजह से मतलब 6 वाले ज्यादा होगा, बिकॉज द चार्ज इज मोर, इवन दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्जैक्टली फॉलोइंग द कूलम्स लॉ, लेकिन अप्रोक्सीमेशंस के हिसाब से हम कह रहे हैं बस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आर इन डिफरेंट डिफरेंशियल्स, सो देयर रेडियस विल बी डिफरेंट। ठीक है, बट आई ओके होप यू गॉट द कंसेप्ट। एनायन वाला और लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने वाला में फर्क क्या है? ठीक है, यस सर, गॉट इट। जहां कहीं भी कुछ ऊपर नीचे हो, वहां पे जो रीजन होता है दैट ऑलवेज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक तय चीज के बारे में और बताना है, जो सेकंड पीरियड होता है ना, इन जनरल होना चाहिए द सेकंड पीरियड एलिमेंट, देन वी हैव थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो सेकंड पीरियड उसके नीचे आता थर्ड पीरियड, राइट? तो सेकंड और थर्ड पीरियड कंपेयर करेंगे तो वी आर इन अ, प्लीज अंडरस्टैंड, when we are comparing only inside second period, then we are traveling in a period, but when I compare second period versus third period, then we are in a group. Now what should happen as we are going down, once again, as we are going down, the delta HE should decrease, but it is not happening in the case for fluorine, it is not happening in the case for oxygen. Why? The reason is, again, the small size.
The small size which was responsible for the higher electron gain enthalpy, it becomes a curse now. Why? Because due to small size, ripple also increases. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, between fluorine and oxygen and sulfur, sulfur का ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, जिसमें नेगेटिव साइन रहेगा, वो नेगेटिव साइन मान के रखिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा. ठीक है, उसके बाद आपके पास एटॉमिक साइज जो है उसमें भी कुछ डेविएशन है, उसको भी बता दें. रिलीज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग. And once you're done writing, done. Alia, Yes. अब जो हमारे पास ग्रुप 13 है जिसमें होता है बैगन, आलू, गाजर, इन थैल, है ना, इट इज बोरोन एल्यूमिनियम कैलीमेन इंडियम थैलियम. सो एक्सपेक्टेड ये था, दिस शुड बी द साइज, बट यहाँ पे थोड़ा डेविएशन होता है. व्हाट हैपेंस हियर इज कि अगर आप गैलियम में देखें, देन गैलियम, just before gallium you have 10 d orbitals, हाँ, d block elements 10 आ जाते हैं. एंड सिंस गैलियम में d ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होता है, द शील्डिंग इज लो, ठीक है, द शील्डिंग इज लो एंड दैट इज वाई इसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम. सो द करेक्ट ऑर्डर बिकम्स boron, then you have gallium, then you have aluminium, then you have indium, and it is approximately equal to thallium. ठीक है, इसका 167, इसका 170 पिकोमीटर होता है, बहुत ज्यादा सिमिलर वैल्यूज होते हैं. ठीक है, सो प्लीज राइट दिस डाउन आल्सो. एंड आई होप लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन को आपने याद रखा होगा वहां से, क्लास 12 कोर्स से. चलिए, should I move on?
बताएंगे जरा। Should I move on, Alia and Iram? Yes, sir. क्योंकि फर्स्ट एनालाइजेशन एंथैल्पी से कितना आ रहा है? Has answered. Alia, please try. So, बताएं। sir, is it possible to change the price tag? Sorry? Change what, Iram? Class Is it time. possible to change what? Class time. Which Yes. class? लेकिन ये तो हर वीक बदलता है ना? Oh, yeah. हाँ, वो भी है. कितने बजे इफ्तार कर रहे हैं आप? 6:30. 6:30 पे इफ्तार हो रही है, 6:30 पे क्लास स्टार्ट हो रही है। Yeah. सो 15 मिनट लेट चलेगा? Yeah. 15 minutes. 6:45 will be fine for you? Yes. Fine, ठीक है, तो 15 मिनट we can adjust. Alia, what happened? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तभी भी हम लोगों ने देखा था, नियॉन का ज्यादा होगा, है ना, फ्लोरीन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन दो केसेस में, इन द बी एंड सी केस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आया है, अच्छा ठीक है, ये हमने नहीं बताया था, इसको भी बता था, ठीक है, बेरिलियम और बोरोन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम कितना होता है जरा बताइएगा? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम 1s2 2s2। बोरोन का क्या होगा? बोरोन विल बी 1s2 2s2 2p1। व्हाट डू यू थिंक, वेयर इट विल बी इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन? एस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या पी से? P. पी से। सो बेरिलियम विल बी टफ, तो जो ऑर्डर हो जाता है ना वो लिथियम, उसके बाद बोरॉन से निकालना आसान, उसके बाद बेरिलियम, एंड उसके बाद फिर आपके पास कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन एंड देन, ठीक है। एक यहाँ पे जो शिफ्ट आया, दिस इज बिकॉज ऑफ एस वर्सेस पी, एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो आया है दैट इज बिकॉज ऑफ हार्टफेल। दीज आर द टू चेंजेस इन द टू पी सेकंड पीरियड ऑफ द सेकंड पीरियड, ये दोनों चेंजेस होते हैं।
ठीक है, सी होगा है ना। आई होप आपने लिखा। मूविंग ऑन, एग्जैक्ट सवाल ही आ गया। ये तो अभी हम लोगों ने किया ना टीम के लिए। ऑप्शन डी, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। व्हाट हैपेंड आलिया? आपका आंसर नहीं आ रहा। आलिया तो नेट पे करा रहा था। आलिया, मैं ऑडिबल? हेलो, यस आलिया। यस सर, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो जा रही थी बीच में, तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। The species argon A positive, इसमें बस एक एक चीज समझिएगा। नोबल गैस का हमेशा सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है ना, बिकॉज नोबल गैस में भी मेजर दी वांडर वाल रेडियस, तो नोबल गैस का हमेशा ज्यादा रहेगा। बाकी आप कैटायंस में चार्ज के हिसाब से देख लीजिए, जिसमें जितना ज्यादा चार्ज रहेगा वो उतना छोटा रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देयर इज नथिंग कंफ्यूजिंग। यस, एकदम करेक्ट। यस करेक्ट। व्हाट हैपेंड नबील? आपका भी इंटरनेट खराब है क्या? ट्राई दिस गाइस।
Okay, Nabeel. Kiran, please read this completely. Na? 11 तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने. I'm saying this. You must have studied this in 11th. See here, guys. So first is chlorine is stronger oxidizing agent than fluorine because chlorine fluorine bond. अब यहाँ पे बात हो रही है. It is between F2 and Cl2. So F is going to be what? F2 is going to association enthalpy one because we can associate easily. Because of the small size of fluorine, there is electronic repulsion and there is lone pair also. दोनों fluorine में क्या होता है? You have 3 lone pairs on each fluorine atom. That is why there is a huge repulsion and they can break easily. So this is true. Moving on. The next statement is fluoride ion, it has high hydration enthalpy. If I compare it with, whenever we talk about reducing agent or oxidizing agent, we have to consider 3 things. ठीक है? एक तो आपके पास this is oxidizing agent, that means it is going to oxidize be reduced for oxygen. You look at the sublimation, delta H sublimation or delta H मतलब atomization, that will be more appropriate, and then delta H titration. If I compare F negative and Cl negative, so F negative is small, तो small में आराम से क्या हो सकता है? Small में you will have a high level of hydration because जो small size का ion, उसका nucleus near shell. Hydration में क्या होता है? Water के oxygen and it is having hydrogen. Hydrogen is going to have positive charges, so that hydrogen molecules are going to interact with the nucleus of the F negative ion atom. वही जब chlorine होगा तो chlorine का nucleus and chlorine is larger in size. So now the hydrogen atom will be interacting with the nucleus of chlorine and this distance is farther away. That is why this interaction is much more feasible and much more effective. So fluorine क्या hydration enthalpy is also what? Higher. This is also true. अब आगे देखने की जरूरत नहीं because all the options are having only 2 options. तो B, C, A, B. A, B will be correct. अगला जो C है ना, electron gain enthalpy of fluorine is less negative than fluorine. अब ध्यान दीजिए, फ्लोरीन और फ्लोरीन लेस नेगेटिव, हम सिर्फ ना एग्जांपल दे रहे हैं. -8 -10, ठीक है, which is less negative. Which is less negative. See, these statements are true, but यहाँ पे इसका effect जो है ना, the effect of this particular part is not going to be huge because both of these are what? Both of these are going to be negative. Both of these are feasible already. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आपको बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा है, जो भी स्टेबलाइजेशन आने वाला है, दैट इज बिकॉज ऑफ एटमाइजेशन. हाउ इजी इज द एटमाइजेशन एंड हाउ गुड इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी? इवन दी स्टेटमेंट, but these things are not going to tell on the oxidizing power. Moving on, why is these two factoring? Because यही डिसोसिएशन हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो स्विंग ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों के लिए नेगेटिव है, वहां पे आपको कंपेयर करने की जरूरत है. Moving on, ये कीजिए जरा.
happened guys, ये थोड़ा सा तो हमने समझाया था ना. This is regarding the first ionization enthalpy of X and Y and second ionization enthalpy of X and Y. What can you say about, अच्छा by the way, alkaline earth metals और alkali metal. Alkali metal क्या होते हैं? Group 1. Alkaline earth metal group 2. ठीक है, अब कीजिए जरा. I'm going to give you guys, take one more minute. Got all the answers now. Yeah, okay, fine. Yeah, that's all right. You can. Please tell Learnivio. I hope you have Learnivio's number. And please tell them that you need the recordings. They will send it to you. Okay, Alia? Okay. ठीक है. B आंसर किया है आपने, देखते हैं. So we have X में is 490 and for Y first ionization enthalpy is 590, 419 and 590. Second क्या है आपके पास यहाँ पे 3069 और second ionization enthalpy for this is 1145. So comparatively X में first वाला निकालना आसान है और Y के लिए second वाला निकालना आसान है. X should be group 1 और Y should be group 2, है ना. बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे. B will be the correct answer. Correct. चलिए, moving on. Try this. The following is correctly matched. या फिर कैसे किया आपने बताइए जी.
So Mn2O7 is acidic. So Mn2O7 इज एसिडिक। acid. अच्छा बस चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपने सही किया है दैट दिस इज एसिडिक। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन अदर्स? पोटेशियम SN ठीक है, these are the acidic, that is correct। न्यूट्रल में आपके पास यहाँ पे आई थिंक N2O जो उन्होंने डाल दिया, NO2 डाल दिया, दैट इज नॉट राइट। एंड इन द केस ऑफ बेसिक ऑक्साइड SnO2 IN2 होल राइट, दिस इज नॉट बेसिक आई गेस। इंडियम का जो ऑक्साइड है और ऑक्साइड बेसिक, यहाँ पे गैलियम का इट इज नॉट बेसिक, जर्मेनियम इज जर्मेनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक सॉरी। ठीक है, सिमिलर एम्फोटेरिक और द करेक्ट सीक्वेंस न्यूट्रल एसिडिक, ये बताना आपको। there is neutral acidic basic amphoteric। neutral acidic basic amphoteric। बी और डी में आप कंफ्यूज हो गए। जिंक न्यूट्रल नहीं होगा लेकिन ना, जिंक विल नॉट बी न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल न्यूट्रल बहुत कम होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में सबसे पहले तो H2O आता है, ठीक, उसी के साथ याद रखिए N2O, फिर आएगा आपके पास CO, उसी के साथ याद रखिए NO। ठीक है, तो चार याद करके रखिए आप, यही मतलब यही याद रखिए न्यूट्रल में। ठीक है, तो न्यूट्रल के केस में आप देखिए NO आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद है आपके पास जिंक और कार्बन। मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड। कुछ याद आया आपको? 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड। 10th में था। 10th में नहीं था? हाँ, 10th में नहीं है पक्का? Oxides we don't have. ठीक से बात कर रहे हैं, 10th में नहीं है ऑक्साइड, 10th में है ऑक्साइड। मेटल नॉन मेटल चैप्टर है 10th में? नहीं मेटल नॉन मेटल चैप्टर है कि नहीं? नहीं 10th है। में मेटल नॉन मेटल चैप्टर नहीं। कौन से बोर्ड में है आप? कौन से बोर्ड में थे?
कौन से बोर्ड में थे हिरम? बीएससी में थे। कोविड था क्या? नो, क्या है? कोविड था, अच्छा इसीलिए दैट मेक्स सेंस। यस सर, याद है। याद नहीं है आपको? ओके, metals being basic. Like, okay, okay. उल्टा दिख रहा है क्या? नो सर, लिख रहा है। इधर दिख रहा है? यस क्या लिखा है? मेटालिक, क्या लिखा है? सर, ब्लर है। सॉरी, Metallic oxides are basic in some, हाँ ठीक, काफी 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 है। ये क्या है? केमिस्ट्री, साइंस फॉर sir, विच I क्लास? don't remember this chapter. बट ये याद रखिए, ठीक है ना? अभी याद रखिए। मेटल ऑक्साइड्स आर गोइंग टू बी व्हाट? मेटल ऑक्साइड्स आर गोइंग टू बी बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर गोइंग टू बी एसिडिक। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? एनो, देखिए ए और बी में से कुछ या सी, ठीक है, अभी तुमको नहीं पता। उसके बाद एसिड है, मेटल कौन सा है इसमें? यहाँ पे आपके पास दो, एक तो कैल्शियम भी है एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या? कार्बन है, CO2। ठीक है, CO2 और का है सी में भी CO2। आगे देखते हैं, बिटवीन जिंक एंड कैल्शियम विच इज मोर मेटल? मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? जिंक और Zinc, कैल्शियम कंपैरिजन? zinc is अरे metal. जिंक कैसे होगा रे भाई? जिंक इज मेटल, कैल्शियम और जिंक पे कौन ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर करेगा? कैल्शियम और जिंक में कौन ज्यादा शो करेगा मेटालिक कैरेक्टर? देखिए, as we go, metal are those which have tendency to lose electron. As we go left to right in a period, what happens? Delta H ionization increases. जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के निकलने की क्षमता कम होती जा रही है। The ability to remove electron is getting tougher and tougher, है ना? तो कैल्शियम तो इधर आता है और जिंक इधर आता है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, दैट्स व्हाई कैल्शियम इज अ बेटर मेटल। ठीक है, उसके बाद आएगा बेसिक में कैल्शियम, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आपको सही था, बी या डी में से कोई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दूसरा बस न्यूट्रल, मेटालिक और नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक है, और लिख लीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ना अलग अलग मेटल होते हैं, सो दे विल, मतलब उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसके लिए ऐसे आप क्या कीजिएगा,
जनाबे आली ने बेकार गाया, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद और भी अगर आप लिखना हो, उसके बाद लिखिएगा आज सब गाड़ी इंदौर जही ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग,